Hello everyone, welcome back to your channel, and today we are going to continue with nature and significance of management. Today's agenda is functions of management and coordination. Okay, जो first time viewers हैं, don't forget to subscribe the channel. Also press the bell icon to get the regular updates, and feel free to get in touch with us for any kind of queries, any kind of problems. Okay, so here we start. See, already we had a good talk regarding what management is. Management is a process. Now, management is a process of 5 functions: P, O, S, D, and C. Planning, organizing, staffing, yes, directing, and controlling. So now, what is planning? Planning is deciding in advance what is to be done, how is to be done, and who is supposed to do it. This is what we do in planning. It decides the goals or targets in advance, and not just goals, also the way of doing it, also the way of achieving it. So this is what planning does. This is what planning does here. See this. And remember, planning gives you assurance. Planning gives you what? Comfort zone. एक assurance मिलती है, गलतियों के या नुकसान के चांसेस कम हो जाते हैं, खत्म नहीं होते. Okay, organizing means plan कर लिया, you have decided, now you are going to organize. You'll arrange the resources, you'll arrange the work, who is supposed to do what, who is supposed to report to whom, कौन किससे सवाल कर सकता है, कौन किसके अंडर काम करेगा, कौन किसका बॉस होगा, ये आप तय करेंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन. एंड देन you will be dividing the whole work in smaller parts, dividing the whole work in smaller parts, and then assigning the job to different people. मतलब डिपार्टमेंट्स बन जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन. हर डिपार्टमेंट अपने काम पे फोकस करता है, एंड इन जनरल इट रिजल्ट्स इन गुड स्पेशलाइज्ड मेथोडिकल वर्क. देन कम्स स्टाफिंग, गेटिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब. आपने ऑर्गेनाइज कर दिया, डिपार्टमेंट डिसाइड कर दिए, नाउ यू नीड राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब. यू नीड Amit Singh to go and teach accounts or business studies. You cannot ask Amit Singh to go and do maths with students. You need right person with right qualification, with right experience, so that they know their job, and that is how it is done. This is why staffing को एक और नाम दिया गया है ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन. 4 एलिमेंट्स होते हैं: रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट एंड ट्रेनिंग. ओके, देन कम्स डायरेक्टिंग. डायरेक्टिंग में हम लीडरशिप की बात करते हैं, सुपरविजन की बात करते हैं, कम्युनिकेशन और मोटिवेशन की बात करते हैं. लीड करते हैं विद गुड इंटेंशन, विद गुड एफर्ट अपने एम्प्लॉयज़ को, सो दैट दे आर एबल टू डू अ गुड प्रॉपर एफर्ट इन द राइट डायरेक्शन. हम सारे रिसोर्सेज जो इकट्ठे किए थे ऑर्गेनाइजिंग के टाइम पे, उनको डायरेक्ट करते हैं किधर की तरफ? टूवर्ड्स द कॉमन गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. द होल एफर्ट इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स वन चैनल. दिस इज व्हाट डायरेक्टिंग इज. सुपरविजन आता है इसमें, जिसमें आप अपने सबऑर्डिनेट्स के जॉब्स को चेक करते हैं, सुपरवाइज करते हैं. लीडरशिप आती है, वे यू इन्फ्लुएंस देयर एफर्ट, इन्फ्लुएंस देयर mentality or thoughts, you motivate them. And communication, the most important part, the lifeblood of the business. business नहीं survive कर सकता effective proper communication के बगैर. then last is controlling. the controlling is that function जिसमें 4 steps होते हैं. first, standard set किया जाता है, then actual performance is accounted for, measured, then compare. These two are compared at the third step, and finally what do we do with the final step?
अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं, कुछ कमियां हैं, तो हम उसको ठीक करते हैं. लाइक 500 करोड़ का टारगेट था, 300 करोड़ पहुंच सके, तो why this 200 crores gap is there? Why this gap is there? Now that is what is done in controlling. Now we talked about the 5 functions here: P, O, S, D and C. When it becomes this, then it is a force. And who does it? Coordination does it. It binds all the functions of management. Management के सभी functions को बांधता है, एक साथ लाता है. Okay? It starts with planning and always keeps going. It never stops. Okay? It integrates, it combines the efforts of the whole group. Unity of action लाता है. Everybody is moving towards one common goal. It's a continuous process, just like management, all pervasive, at all the levels, at all the possible levels of the business or management. It is the responsibility of all the managers, and most importantly, it is a deliberate function. You have to put in effort for this. It never happens automatically. And see the importance: grow with the growth in the business, number of employees, and the operation level increases. To synchronize that, उसको settle करने के लिए coordination is important. Functional differentiation is required when, or I should say result in, जब business बढ़ता है तो different departments आते हैं, उनके सबके अलग अलग जॉब को, अलग अलग एक्टिविटीज़ को कैसे कंट्रोल करेंगे, कैसे सिंक्रनाइज करेंगे. दैट इज़ व्हाट वी डू विद coordination. And then with the different departments working for themselves, we get into the specialization stage, which is the most important, and the result of the benefits of that are always long lasting for us. Okay.